See, 10th standard, we have completed all the lessons of science 2. Okay, right from first to the 10th one. And we have completed with exhaustive discussion on all the topics. And now it is the time within a month or so, you are going to face your board exams. Correct? So no doubt because of this COVID-19 situation, things are quite uncertain. But right now, what I want to discuss with all of you is what exactly you're going to remember when you're going to write papers. Because writing a paper is also a skill and a talent, which is very important. Okay, because see, many a times what happens is your learning, your knowledge, your concepts are very clear. But ultimately, when it comes to board exam, how is the board exam different from any other exam? Tell me. क्या डिफरेंस है बोर्ड एग्जाम का जो अब तक बाकी के एग्जाम्स में हुआ है उसके सामने? सेंटर बोर्ड्स में बाहर का क्वेश्चन है, बाहर के क्वेश्चंस एंड exam center. Okay, you might have a different school as a center and you have to go and appear over there. What else? बाहर के क्वेश्चन मतलब एरेंसी पोर्शन सबका सेम है. This is exam which is conducted at the state level. Correct. So जो तुम लोग का सिलेबस है, it is the same across the state. तो SSC बोर्ड का जो क्वेश्चन पेपर होगा, that will be the same across the state. Right. So for the state means same textbook, same syllabus. Right. So बाहर का करके नहीं आएगा, उसमें there is a possibility कि questions can be slightly twisted and understanding based हो सकते हैं. Everything may not be directly factual. That is important. Any other difference? How is a board exam more significant? The most important thing. बोल दीपाली. important exam for future. Okay, it is a determining step for your further career. First step in your career, you can say. That is right. That एक और बहुत important चीज तुम लोग बोल रहे हो. Is the paper set by your school teachers? No. No. No, Maybe they may be one part of the panel, but you don't know. अभी तक जो स्कूल के एग्जाम्स दे रहे थे, you were sure that your teachers were setting the paper because those papers were only for your school level. Even the corrections were done by your school teachers. But board exam का corrections कौन करेंगे? Do you know who are going to correct your papers? Considering a normal offline exam, pen and paper exam, पेपर तुम लोग लिखकर वहां सबमिट कर दोगे. Will you come to know who is going to correct it? नहीं. That is something unknown. So imagine the difference. I'm coming to that point. कि you're writing a normal school exam where the teachers know many of you. तो तुम लोग का पेपर देखकर वो अंदाजा मिल जाता है. Like even when I do the corrections, okay, to some extent I know many of you. कि what is your level of knowledge? How much is your preparation? So while doing the correction, that thing remains in the mind. But when a board exam is given, your papers go to an unknown person. Your identity is not revealed. पेपर देखकर ये भी नहीं पता चलेगा कि स्टूडेंट जो है वो लड़का है कि लड़की है. कुछ नहीं पता चलेगा. कौन से जगह का है, क्या है, nothing. So it is only based on what answers you have written that the assessment will be done. So that means यहाँ पे सबसे important क्या हो जाता है कि from your answers, from your answer paper, you should be able to convince the examiner that what I have written is correct and you're supposed to give me marks. And the examiner has got a key, answer key करके बोलते हैं कि कोई particular brief answer है suppose 2 marks का. तो in that answer key, word to word नहीं tally करेंगे, but there will be certain keywords which are expected in that answer. And वो आंसर में अगर वो keywords दिख गया तो you get those marks. उसके आगे पीछे sentence formation here and there will be understood. Because while writing, it may not be possible that every student will write exactly the same sentence. Grammatical changes तो हो सकते हैं, but answer का content, answer का keywords are very significant. Did you understand? Okay, so for that
your preparation should come into picture. कि when you are learning a concept from your textbook, from your study materials, whatever teachers have given you, you should know that when I'm learning a particular topic, इसका आंसर जब मैं लिखूंगा तो इसमें ये words आने चाहिए, ये phrases आने चाहिए. Only then your answer will be correct. And for that, the another important requirement which you all must have is you should have a proper command over language. कि concept अगर समझ में आ गया तो you should be able to write the answers in your own words. अगर वो command over language आ गया ना, half of your work is done. You will automatically feel confident कि yes, I know the concept, so I'll be able to write in my own words. इसलिए पूरा by hearting मत करो. There is some degree of by hearting that you must do. अब साइंटिस्ट के नाम याद रखना है तो उसमें अंडरस्टैंडिंग कुछ नहीं है कि कैसे हम साइंटिस्ट के नाम को डिराइव करेंगे. वो नाम है वो ऐसे ही लर्न करना है. ये so and so person has contributed this. तो कुछ चीजों में by heart करना ही पड़ता है. But apart from that, understanding also matters. Okay, so when you are preparing for the exam, when you are writing, practicing the writing part, do keep this in mind. कि मुझे आंसर्स ऐसे तैयार करना है कि एक अनजान इंसान मेरा आंसर पढ़ के बोल सके कि yes, this person knows the concept properly. तो उसको सोचना नहीं पड़े कि out of 2 whether I should give 1.5 or whether I should give 1 or full 2 marks. As an examiner, that person should feel confident कि ऊपर से देख लिया yes, this person knows the answer. पूरा marks दे दो. That way you will be able to score well. Board exams में ultimately target क्या है? See, understanding है, concept है, everything is there. Knowledge should be there. But now it is the time to focus more on your practice. Practically, how should you put your efforts so that you score maximum marks? So writing a paper in a proper way, presenting with the correct skills will help you to achieve that. So that is why you should work on presentation and neatness. Many a times there are students whose knowledge level is very good, but on paper, ekdam kachda lagta hai. So please avoid that. Okay. And another thing you should remember, across the entire state, board exams will be held at the same time for a given subject. So you can imagine the number of students who are appearing for this exam. जैसे जिस दिन science 2 का exam होगा, you can imagine lakhs of students are appearing for that, right? So at a time when there are lakhs of papers to be corrected, you can imagine the plight of the examiner. कि examiner को paper जो है वो एक center पे जाके बैठ के correction करना होता है. There is a time limit given. कि within that time limit, so many number of papers have to be corrected, and that too in a correct way. So the examiner is under pressure to finish off the correction. So that means what? You have to ensure that from your side, you're not creating trouble for the examiner by not presenting a neat paper. So it's like when there is a bundle of papers given to the examiner, एक के बाद एक उठा के वही answers पढ़ के correction करना है. So how can you ensure that your paper stands out from the others? कि जैसे ही examiner के पास तुम्हारा paper आया, examiner has opened your paper, उसको देख के अच्छा लगना चाहिए कि yes, this is a neat paper. Getting it? वरना first page पे ही correction, cuttings, वहीं पे impression down. So with your writing skills, you are supposed to create that impression कि yes, what I'm writing is confident. Because your confidence level will be reflected in your writing. Are you getting it? तो इसलिए अपने English grammatical skills पे भी focus करो. Okay, because especially if you see the lessons like social health, okay, even disaster management, ऐसे lessons में देखना application type questions आते. In some of the tests, even I had asked you some questions like that. कि you find somebody doing this, so what advice will you give? You are in such a situation, what will you do at that time? ऐसे questions आते हैं ना, where you have to write the answer based on your understanding. So there, your language should be correct and convincing enough. Only then you will get the marks. Correct? So examiner को वो impression देना चाहिए. Even in the topic like environment management, there are lots of questions which can be application based.
You find a person throwing a plastic bag in the water body. What will you tell that person? Sounds like a very simple situation. But what exactly will you tell in such a situation? Everybody knows what you're going to tell. You will go and tell the person कि ऐसे plastic मत फेंको करके. But उसके आगे का point ज़्यादा significant है ना कि why you're going to tell that person. That must be there in the answer. If you just write the answer saying that I will tell the person not to throw plastic bag, you're not going to get full marks for this. It is logical. Of course, you're going to tell. But why will you tell? That will show your understanding of the reason behind it. जैसे in the test which I had taken, social health जो included था, उसमें मैंने question पूछा था कि your brother or sister plays a lot of games on the mobile phone while eating. So what advice will you give? ऐसे question मैंने पूछे थे. So many of you I have seen in the answer paper, you have written, I will advise my brother or sister not to play mobile games. उतने में ही छोड़ दिया. So do you think you should get full 2 marks for this? That is understandable. Getting it? The question here is your analysis, why you're going to tell that. वो लिखना जरूरी है. So that way your answer, this kind of questions, you should be able to highlight or emphasize this fact. कि I know the reason behind this. Environment को नुकसान है, health को नुकसान है, whatever it is. And उसके scientifically की 2 point लिखता है. Got it? Okay. So these things really matters. Okay. Then coming to the neatness part, let me show you something. See, now as far as the handwriting is concerned, right now it is not the time to work on your handwriting and improve it, but just make sure that one thing, your handwriting does not give a proof that you're going to become a doctor. Okay. Handwriting ऐसा रखो कि anybody who wants to read should be able to read. उसको पेपर देख के ये ना सोचना पड़े कि कौन से लैंग्वेज में लिखा है पेपर. There are some students who write like that. ECG ग्राफ की तरह लिखते हैं. Okay, पहले ग्राफ चलता रहेगा, इंसान जिंदा है, एक टाइम आएगा खत्म. Okay, so please don't do that. Especially towards the end of the paper, the ECG goes straight, the end. ठीक है? So avoid that. So whatever is your handwriting on the first page, वही handwriting last page तक रहना चाहिए. Don't show that gradation. Okay, if you want to create impression on the first page, the impression must be the same till the last page also. Right? So just look at over here. You can see the blank screen I'm sharing. So suppose if this is your page, ठीक है, एक normal A4 size का page रहेगा, whatever it is. So when you are writing answer, जैसे in the test which I also took, that is something one I noticed, except for some of you who have done it well, there are some others I saw कि जैसे ऊपर heading वाला part रहता है page में. So I don't understand why do you want to squeeze things over here? नाम ये वो सब ऊपर ऐसा लिख के रखा है कि when I am doing online correction, मुझे जगह ही नहीं है marks लिखने के लिए. Everything squeezed very tightly. Margin तो है ही नहीं. So don't do that. Got it? Leave space at the top on the left side so that when the teacher is assessing, even offline में भी जब करेंगे तो tick mark डालेंगे, cross mark डालेंगे. Okay, and वहाँ marks लिखेंगे ना, तो वहाँ space होना चाहिए. Getting it? So that you understand. So ऐसा लिखो ना exam के like, just imagine the situation that if you are the examiner and you are receiving such papers to correct, how will you feel? ऐसे सोच के लिखो exam. So if you don't trouble the examiner won't trouble you. Getting it? And then there is also obviously the luck factor also. कि जिस examiner के पास गया उसका mood कैसा है, सुबह खाने में नमक ज्यादा हो गया, मूड अच्छा नहीं है, तो पेपर पे नहीं उतरना चाहिए ना. तो खाने में नमक ज्यादा हो गया, तुम्हारे पेपर में मिर्च ज्यादा हो गया तो अच्छा नहीं लगेगा. That is not something that you can do about it, but at least you can make the person feel good with your paper. Getting it? Okay. So left side mein, it is always advisable to put 2 margins like this. And right side में एक छोटा सा margin.
and whatever you write is between these two. Remember, छोटा सा margin on the right side. Okay, there are some students who are over smart. Margin मतलब यहाँ तक बना देते कि आंसर ऐसा लगता है margin में लिखा हुआ. Getting it? It should be comfortable and legible and realistic. Margin बहुत बड़ा बड़ा नहीं करना. And why there are two lines on the left side? See, अभी जैसे question number 1, ठीक है, उसमें सब question होगा 1A for example, so that will come in the main margin. Okay, and जैसे for example objective type question है fill in the blanks, 1A fill in the blanks, so you don't have to write the question, fill in the blanks वगैरह कुछ लिखने की जरूरत नहीं, question number लिखो बराबर. So suppose there are 4 fill in the blanks in that question, तो रोमन न्यूमरल या वॉट एवर इट इज जो क्वेश्चन पेपर में दिया है वही पैटर्न रखोगे. तो फर्स्ट वन उसका नंबरिंग यहां लिखो, एंड देन यू विल राइट द सेंटेंस वॉट एवर इट इज. फिल इन द ब्लैंक्स के लिए इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू राइट द फुल सेंटेंस, एंड वेर एवर इज द ब्लैंक एंड यू रिटन द करेक्ट आंसर वो हाईलाइट करो, so that the examiner becomes easy for the examiner to understand what is the question, observe the answer, फटाक tick mark. तो properly fill in the blank में correct answer को underline करो pencils. Yeah, you can make a box also with a pencil. तो ये एक sentence हो गया. Okay, second fill in the blank, एक single line छोड़ दो, write the second one. Okay, write the sentence neatly. Okay, full stop, correct answer, box या underline. ऐसे करके 3-4 जितना भी है खत्म करो. नंबरिंग देखो कहाँ कैसे किया. Then come to question 1B. Okay, तो 1B के लिए भी पूरा लिखो, just don't write B because it can be 2B 3B, confusion होता है. Sometimes students change the order. तो as far as possible ordering भी change मत करो. Please write in the same order as given in the question paper. Getting it? That is very important. Okay, so ऐसे करके keep on attempting all the questions. Correct answer जहां भी आएगा objective type में उसको proper highlight करो, don't miss that. And उसी वक्त कर दो लिखते लिखते. ये मत सोचना कि 4 fill in the blank से पहले लिख लेते हैं, at the end of the paper I will do the underlining and all, वो भूल जाते हैं. Students lose marks on that, even if your answer is correct. Okay, जो क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं उसको उसी वक्त खत्म कर दो. Then go to the next question. ठीक है. Now when you go to the next page, सारे पेजेस में margins proper बनाओ, and when you are putting this margin on the right side, it should be used in that way. margin बनाने के बाद उसके ऊपर लिख के ओवरफ्लो किया हुआ है तो उसका मतलब नहीं. Avoid that. कभी अचानक से यहाँ पे कोई बड़ा सा वर्ड आ गया, सो ये आधा आधा लिखते ना ऐसे, अवॉइड दैट. मयूरेश करके लिखना है तो मयूर इधर लिखा, एश इधर नीचे लिख दिया, नहीं चलेगा. गेटिंग इट? पूरा वर्ड नीचे लिखो. ओके, अवॉइड दिस हाफ ऑफ थिंग. एंड इफ इट इज क्वेश्चन ऑन मैच द कॉलम्स, मेक बोथ द कॉलम्स कंप्लीटली, राइट द करेक्ट आंसर. और एकदम से देख के पता चलना चाहिए कि हाँ करेक्ट आंसर लिखा है करके. ओके, सेम वे now when you go to the questions on say brief answers, ठीक है, जब brief answer लिखोगे तो for example the question number could be say 2A, first question you are attempting. Now suppose brief answer में ऐसा हो गया कि 4 question दिए and you have to attempt any 3 out of 4. So suppose out of the 4 you don't want to attempt the first question, second, third and fourth को attempt करना. Okay, so please write the correct question number. If you are attempting the second one directly, तो question number 1 नहीं लिखोगे. Question number किसी भी सूरत में you are not going to change whatever is given in the question paper. जो वहां दिया है वही question number या लिखोगे. Okay, and brief answers you are going to write point wise. 2 marks के लिए 4 to 5 points. Okay, 4 to 5
different points. Please remember that. Okay, तो ये बहुत जरूरी है. तो when you are writing the answer point wise, ये क्वेश्चन नंबर हो गया, ये सब क्वेश्चन नंबर हो गया, तो आंसर के जो पॉइंट्स नंबर्स है that should be within the margin. बुलेट्स डालो या नंबरिंग डालो whatever, बट आंसर के पॉइंट्स जो है वो अंदर आएंगे लाइक दिस. गेटिंग इट? एंड वो मार्जिन भी मेंटेन करके लिखो आंसर्स लाइक दिस, so that it will be clearly understood कि question number 2A, second question I have attempted, under which I have written 4 points. These are the 4 points of the answers. And after writing the entire answer, leave a single line, go to the next one, third one, fourth one, whatever. Is it clear? Yes, sir. Okay. And जैसे Yes, कि sir. टाइप क्वेश्चन है या किसी भी तरह का क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल इफ दे आस्क अ क्वेश्चन कि टेस्टिस आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स इन मेल्स, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट या गिव रीजंस, तो आंसर का शुरुआत प्रॉपर्ली करो. टेस्टिस आर कॉल्ड एज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स इन मेल्स बिकॉज, देन राइट द पॉइंट्स. कि फर्स्ट पॉइंट, इट प्रोड्यूसेस द मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन. सेकंड पॉइंट, इट प्रोड्यूसेस द मेल गैमेट्स दैट इज द स्पर्म्स. ओके, ऐसे करके क्लियरली प्रॉपरली अंडरस्टैंड कि आंसर पढ़ के एकदम समझ में आ जाए कि यू हैव अंडरस्टूड. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड पेज अगर एंड हो रहे हैं, लास्ट के 2-3 लाइन बचे हुए हैं, तो अवॉइड राइटिंग हाफ आंसर वन साइड एंड हाफ आंसर ऑन द अदर साइड. आंसर वहां शुरू ही मत करो. प्लीज आंसर कंटिन्यू राइटिंग द आंसर ऑन अ न्यू पेज. तो एक पेज में एक साथ पूरा आंसर नजर आएगा तो एग्जामिनर को करेक्शन के लिए इजी पड़ता है, बार बार टर्न नहीं करना पड़े एग्जामिनर को. गेटिंग इट? अगर बहुत ज्यादा बचा है कि ऊपर का 1-2 लाइन में खत्म हो गया एंड देन यू हैव द एंटायर पेज, दैट इज डिफरेंट. तो ठीक है, वहां पूरा ब्रीफ आंसर एक साथ दिखेगा, बट लास्ट के 2-3 लाइन बचे हुए थे, इट्स बेटर टू बिगिन ऑन अ न्यू पेज. दिस इज रियली इंपॉर्टेंट. इफ देयर इज अ क्वेश्चन ऑन डिस्टिंग्विश बिटवीन, सो मेक अ टेबल नाइसली. ओके, डिस्टिंग्विश बिटवीन के लिए कैसा बनाओगे टेबल? सी, यू विल प्रिपेयर द 2 कॉलम्स, ओके, प्रॉपरली. जिसका भी डिस्टिंग्विश है वो दोनों का हेडिंग या लिखोगे, ओके, एंड देन अंदर ऐसे मार्जिन बनाओ लाइक दिस. ओके, एंड उसके पॉइंट्स या लिखो, बुलेट्स डालो, नंबरिंग डालो, व्हाटएवर. ओके, तो फर्स्ट पॉइंट या फर्स्ट पॉइंट है. एंड डिस्टिंग्विश का मतलब है कंपैरेटिव पॉइंट्स होना चाहिए. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ कुछ लिखा है, यहाँ कुछ और ही लिखा है, इररिलेवेंट पॉइंट्स को डिस्टिंग्विश नहीं बोलते. ओके, इफ देयर इज अ डिफरेंशिएट बिटवीन क्वेश्चन ऑन से codon and anticodon. So first point, codon is present on mRNA, anticodon is present on tRNA. So you're not going to write कि codon is present on mRNA, anticodon is not present on mRNA. That is not a point. Getting it? Okay, एक positive एक negative लिख के ऐसा point नहीं बनता है. So that way you have to frame your answers. Wherever possible, give examples. क्वेश्चन में अलग से दिया नहीं जाएगा, especially in a topic like animal classification. You have to give examples. अगर short note question आया, phylum Arthropoda, you will write all the distinguishing features points and in a proper order. सबसे पहले तो distribution, habit and habitat, then come to the general body structure, then come to each individual system, at the end about the reproductive system, and then you will give examples. Only then your answer will carry marks. Okay, biotechnology में अगर applications of biotechnology in agriculture, so you have to write many points. Introduction to microbiology, names of microorganisms, उसके बिना अगर आंसर लिखोगे तो क्या मीनिंग बना? तो write clear cut points. Is that clear, everyone? Yes, sir. Yes, sir. And suppose if you are writing any answer where the answer has got a diagram as well as a description, तो always remember ऊपर पहले diagram बनाओ, नीचे उसका description लिखो. उल्टा नहीं करना, because based on the diagram you are giving the description. That is important. And diagram कैसे बनाओगे? There is a particular way in which you will draw the diagram.
neatly. ज्यादा डायग्राम का है नहीं वैसे तुम लोग को, but still, okay. For example, suppose this is a any small diagram you are drawing. ठीक है? So diagram first of all should have a main heading. किस चीज का डायग्राम है? Okay, so write the heading of the diagram in pencil. Diagram भी pencil में बनाओ please. Don't use a pen for a diagram. It looks very bad. And diagram बनाने के बाद without a labeling, no diagram should be presented. Okay, there should be proper labeling given with an arrow mark pointing towards that part and then write it with pencil. Distribute the labelings equally on both the sides neatly. Okay, इधर ऐसे करके लिखो. Arrow mark cross दिखा सकते हैं, but जब labeling लिखोगे तो please write it straight. That is very important. And then put the entire diagram in a box neatly. Okay, so all such representations which you show, whether it is a diagram, example, you might make a small flow chart. Okay, जैसे अगर types बताना है किसी का, तो ऊपर heading लिखो, ऐसे flow chart type बनाओ, 4 type लिखो, then below that you write the description, so that it becomes easily clear. Flow chart देख के समझ में आ जाएगा examiner, okay, yes, this person knows what is the answer. So that's a trick you should understand. Okay, diagram based description होना चाहिए, clear labelings होने चाहिए. And whenever you are writing something, brief में हो या कहीं पर भी, first of all avoid cuttings and cancellations. And अगर कभी by chance cutting या cancellation करना भी पड़ा, तो you have to do it in a very neat way, please. For example, लिखते लिखते you realize कि you have written a word say codon. Okay, ये लिख दिया, बाद में लगा कि नहीं ये नहीं लिखना है, I want to write something else. कोडॉन की जगह से RNA लिखना है, तो एक कट, one stroke, that's it. And उसके ऊपर overwrite मत करो, please write it next after this. से कोडॉन की जगह पे मुझे RNA लिखना था. Then overall वो आंसर में shabby नहीं दिखेगा. But many a times students क्या करते हैं, कट नहीं करते, वो मर्डर कर डालते. Getting it? That looks very shabby. Because जैसे ही पेज टर्न किया, पहले वो कटिंग नजर आए, and that gives a wrong impression. And एक ही पेज में अगर बहुत कटिंग्स रहेगा, तो वो एक इंप्रेशन देता है कि इस कॉन्फिडेंट ही नहीं है आंसर को लेकर, तो you have more chance of losing marks. All this must be avoided. Did you understand this? Yes, sir. So when you read the question, take a pause, think properly what should be your answer. Overall, frame the answer in your mind first, and then you start writing. That way you should plan. ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्वेश्चन पढ़ा उबड़ खाबड़ एंड देन सोचे, कुछ तो लिखना शुरू किए, आधा लिखने के बाद फिर सोच रहे ये क्या लिख रहा हूं मैं, इसके आगे मुझे आता नहीं है. Then it will give rise to this kind of effects. ठीक है? So that is very very important. And एक और बहुत important instruction है, क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर का जो फॉर्मेट दिया है, you are not going to change that. Okay, स्टूडेंट्स जैसे क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है नॉर्मल नंबर, स्टूडेंट्स आंसर पेपर में रोमन नंबर 2 लिख देते हैं. इट इज रॉन्ग. यू आर नॉट गोइंग टू चेंज द पैटर्न. गेटिंग इट? जो क्वेश्चन पेपर में है वही सेम आएगा आंसर पेपर पे, वॉट एवर इट इज गिवन. कभी क्वेश्चन पेपर में ये दिया तो आंसर पेपर में भी वही लिखो. सब क्वेश्चन, जो सब क्वेश्चन रोमन नंबर 1 ऐसे दिया जाता है ब्रैकेट में, रोमन नंबर 2 वॉट एवर, तो आंसर पेपर में यू कैन नॉट मेक इट ABCD एंड ऑल, या 1 2 3 4. गेटिंग इट? दैट्स द रीजन ब्रीफ आंसर्स का भी मैंने बुलेट्स बताया, बिकॉज बुलेट नंबरिंग किसी भी क्वेश्चन नंबर के साथ मैच नहीं करेगा. दैट विल बी सोनली फॉर योर आंसर. इवन इफ यू आर यूजिंग इन ए नंबरिंग सिस्टम, वो याद रखो क्वेश्चन नंबर के साथ मैच नहीं होना चाहिए. मेनी टाइम्स इट हैपेंस 2A आंसर नंबर 2, फिर से 1 2 3 4 ऐसा आता है. So it creates lot of confusion. That is why आंसर के लिए बुलेट्स यूज करो बेस्ट है. But even if you are using any other numbering system, it should be different from the question numbers.
and that's why the margins also must be separated out, ताकि पता चलेगा ये आंसर के ही पॉइंट्स है. क्वेश्चन नंबर 2 के बाद 3 इधर नीचे. These are very very important things, remember. क्वेश्चन नंबर का पैटर्न बिल्कुल चेंज नहीं करना. All these things are clear. Yes, sir. And board exams के लिए जो भी instructions बाकी स्कूल की तरफ से आएगा, you have to know that properly. At any other page also, जहां बोला जाए बस उधर ही अपना सीट नंबर वगैरह सब लिखो. Okay, do not put your identity of any type anywhere else, and no need to tell कि no unfair means of any type. जो करना है ईमानदारी से करो. Whatever marks you get should be your own marks. Sincerity is always necessary. Honest रहो, sincere रहो. Because अगर बोर्ड एग्जाम में किसी भी तरह का अनफेयर मींस पकड़ा गया तो you know very well. 3 साल का वेकेशन. Getting it? So it's very important. Never in the, not only in this board exam, in the even future in life. Be honest with yourself. And अपने कैपेबिलिटी पे कॉन्फिडेंस रहो. कॉन्फिडेंट रहो, ओवर कॉन्फिडेंट बिल्कुल मत रहो. Getting it? And और चीज जो मैं बताना चाहूंगा कि whenever is the board exam, whatever is the time table, date, time सब बहुत अच्छे से देख के रखो. And look at the timetable and all with your own eyes. कहीं पे सपोज नोटिस बोर्ड वगैरह पे लगा रहेगा तो प्लीज डू नॉट डिपेंड अपॉन योर फ्रेंड्स और एनीवन. यू गो एंड टेक अ लुक. टाइमिंग जो तुम लोग का सेंटर है, हॉल टिकट मिलेगा तो हॉल टिकट संभाल के रखो. योर आईडी कार्ड्स, योर राइटिंग मटेरियल्स. One day before the exam, check everything. Even if you are carrying the same bag every day, do not assume कि hall ticket तो bag में ही है ऐसा करो. These are small things. These are small things that at the last moment वो panic create करते. Avoid that. Okay. And very important thing कि till your board exams, as much as possible, your relatives, your friend circle, your extended family members, social life में जितने हैं सबको दूर रखो. Okay, there are lots of things that will be bombarded on you. Okay, avoid it. And 1000 चीज पूछेंगे. पढ़ाई कैसा चल रहा है, बोर्ड एग्जाम का तैयारी कैसा चल रहा है. Do not pressurize yourself with anything. Be relaxed. Health is important. इसलिए नींद वगैरह बराबर होना चाहिए. बहुत ज्यादा होना भी अच्छा नहीं है. नींद अच्छा होना चाहिए इसका मतलब नहीं कि 15 घंटा सो के निकाल रहे शेर की तरह. ठीक है, नॉर्मल स्लीप. Having good food and especially in this situation health important है. वैक्सीनेशन वगैरह बराबर करवा लो टाइम टू टाइम. एंड ऐसे टाइम पीरियड पे कराओ कि उसके बाद 1 हफ्ते का अच्छे से गैप मिल जाए सो दैट यू आर, अगर फीवर वगैरह कुछ आता है तो यू आर गेटिंग दैट टाइम टू रिकवर एंड सेटल. ऑल दीज आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, राइट. एंड बाकी कुछ भी अगर ऐसे इश्यूज है तो कॉन्टैक्ट योर स्कूल टीचर्स, दे विल बी एबल टू गाइड यू. ओके, कुछ लेटेस्ट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस वगैरह तो स्कूल से पता चलेगा तो वहां अपडेटेड रहो. ठीक है, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट. एंड the last day, please do not keep on learning things till the last day. Especially आखिरी दिनों में नया चीज निकाल के पढ़ो मत. एंड फ्रेंड्स वगैरह कोई भी बोलेंगे कि ये इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ के जाए, ये आएगा, वो आएगा. डोंट बिलीव एनी स्टफ. यू नो द पोर्शन, यू नो व्हाट इज देयर इन द सिलेबस, उतना ही पढ़ो. एंड एग्जाम सेंटर पे जब जाओगे, इफ यू सी अदर्स लुकिंग एट द बुक एंड ऑल डिस्कसिंग समथिंग, जस्ट क्लोज योर ईयर्स. रिलैक्स, टेक अ डीप ब्रेथ. जस्ट अच्छे से एग्जाम दे दो बस, कॉन्फिडेंटली. ठीक है. एंड इवन आफ्टर द एग्जाम किसी से कुछ डिस्कस करने की जरूरत नहीं. तेरे को आंसर कितना मिला, मुझे आंसर कितना मिला, स्पेशली इन अ सब्जेक्ट लाइक मैथ्स. नो नीड टू बिकम आइंस्टाइन्स एंड ऑल ओवर देयर. बिकॉज एवरीबडी माइट बी डिस्कसिंग कि मुझे 0.8 मिला, मुझे 0.08 मिला. यू माइट बी वंडरिंग मुझे 8000 कैसे मिला करे. Getting it? All this happens. You might have made a mistake, forget it. एग्जाम दे दिया, हो गया. रिजल्ट आएगा तब देखा जाएगा. So that it doesn't affect your other papers. Getting it? So avoid any other kind of disturbance at home also. इसका मतलब ये नहीं कि केबल वेबल सब बंद करके एकदम बैठे, डिस्कनेक्ट नहीं होना है बिल्कुल. Okay, all sides of relaxation is also equally important. You have learned social health now. Okay, overall just normal रहना, confidently do exam. Getting it? No panicking, nothing at all.
जो भी होगा अच्छा ही होगा. Okay, be positive, always have positive thoughts in your mind. Patience रखो बस. ठीक है. So I think the instructions, everything has covered everything well. Okay, and unnecessary चीजों में time waste भी मत करो, वो भी important है. Okay, पढ़ाई से distract भी नहीं होना, थोड़ा ज्यादा time, maximum time पढ़ाई को ही देना है. Writing practice करो, drawing practice करो, maths के sums करो. Okay, and open your mouth, read, pronounce and learn loudly. And when you prepare at home, सोफे पे लेट के ऐसे नॉवेल की तरह नहीं पढ़ना है. Your posture will determine your concentration, remember that. तो एक प्रॉपर पोस्चर में बैठो या फिर वॉक अराउंड एंड लो. एंड व्हेन यू आर स्टडिंग, मोबाइल असाइड प्लीज, एक्सेप्ट व्हेन यू आर स्टडिंग फ्रॉम द मोबाइल. ठीक है, बट उस टाइम पे सोशल मीडिया वगैरह बंद रखो. नो डिस्ट्रैक्शन, नथिंग एट ऑल. जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट निकल रहा है, उसी में कॉन्सेंट्रेट करो उस वक्त, so that whatever time you're spending for that subject वो पूरी तरह effective रहे. Is it clear? ठीक है. So Yes, all sir. the instructions for the exam, I think I have covered everything. इसके अलावा और भी कुछ रहेगा तो you can always ask me or tell me, we can have a discussion. ठीक है.